Let us start with the. Am I audible to all of you? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Good evening. Good evening, हाँ, sir. good evening. Yes, sir. Good evening, sir. You are audible. Good evening, Subhamna. How are you? So last time हमने बहुत सारा चीज पढ़ा था, but the question is about IF, intermediate filament, very important. Microfilaments में हमने पढ़ लिया था काफी कुछ डिटेल्स, तो उस पर टेस्ट होगा नेक्स्ट वीक से, ये सारा चीज पे है ना। तो प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हो कि नहीं? एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करो, और मैंने एक बुक डाउनलोड करी है एमसीक्यू की, वो मैं अपलोड कर दूंगा गूगल क्लास पे, ठीक है? उसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और सबकी तबीयत ठीक है ना? कोरोना तो नहीं हुआ किसी को? आजकल डेली पूछना पड़ता है, कोरोना तो नहीं हुआ किसी को? नहीं सर, चलो, हम लोग ठीक thank है। God. आप भी ठीक है? हाँ, फर्स्ट क्लास है। हमने टीका लगवा लिया है तो इम्यूनिटी बूस्ट हो गई, और यहाँ भी लॉकडाउन लग गया है तो वर्क फ्रॉम होम हो गया, काफी ज्यादा काम बढ़ गया, बट लगे हैं। एक बुक चैप्टर अभी फिनिश किया है। आफरीन, मैंने एक लिंक भेजा होगा ग्रुप में, एक जेआरएफ की पोजीशन है, ठीक है ना? तो वो अप्लाई कर देना। उसमें सचिन सर हमारे फ्रेंड डायरेक्टर हैं, तो मे भी कुछ पॉसिबिलिटी बन जाए। चलो, लेट अस स्टार्ट। So IF and microtubule we will discuss today. First we will discuss about the intermediate filament, and the question is why they are very stronger than steel. So let us find out various answers about this. And this is neurofilaments. ये जो black में दिख रहा है, this is a neurofilament, very strong structure. So intermediate filaments, let us have a comparative look so that we can revise the things also. Microfilament हमने पढ़ लिया है. This is going to be going to have involvement of actin filaments, and actin is activated by the ATP, and then they are going to form various structures like Sol, gel, network, linear bundle, है ना? And a lot more movable structure, highly dynamic, polarized, and sometime in the muscle they are acting in coordination with the myosins. Contractile mesentery and network at cell cortex. Microtubule अभी पढ़ना है, हमने पढ़ा नहीं है, but these are the made up of alpha beta tubulin, binds to GTP, and rigid, not easily bent. This is also rigid microtubule. Intermediate filament, greatest tensile strength, very strong. So microtubule highly dynamic, polarized, and very popular in the cell division. During the cell division, you can see their appearance, and they are also going to organize in the transport of organelle. Okay, so intermediate filaments, if subunit does not bind in nucleotide, great tensile strength, and assemble into pre-existing filaments, less dynamic, unpolarized, no motors, and that's why they are very strong, I think, and they are very important for cell and tissue integrity. Let us have a look. So हम इस बात में आएंगे अभी. So you can see there are more than 50 different intermediate filaments protein have been identified, है ना? तो अभी तक 6 ग्रुप का क्लासिफिकेशन किया गया, but I will teach you only 4 group, okay? Because 4 group is very popular and they are going to be the main part. So intermediate filament, you will see they are found in epithelial cell, axonal, nuclear, है ना? Nuclear membrane you can say, and vimentin proteins. Okay, epithelial cell and their derivative, axonal neurons, nuclear lamin A, B, and C, है ना? Inside surface of various structures. So intermediate filaments, they are found in most animal, but never they are found in plants. Plants में कभी नहीं होते, and not even in the fungi. तो ये important point note कर लो. Right.
ठीक है. They are smaller than microtubule but larger than microfilament. Subunits are alpha helical rods that assemble into rope-like filaments. Unlike microfilaments, IF does not contribute to cell motility. Cell motility में कोई रोल नहीं होता, right? So their subunit is alpha helical rod and they are assembling like rope-like filaments. That's why they may be very, very stronger and they never found in the plant and fungi, only part of animal. So provide mechanical support for plasma membrane where it comes in contact with other cells or with extracellular matrix. Extremely stable structure, right? Extremely stable structure. Note कर लो, extremely stable structure with solution containing detergent or high concentration of salts. जैसे आपने देखा था, with a varying concentration of salt, you can isolate the G-actin. But here it's a very, very strong. You cannot isolate this structure. And since they are involved in the mechanical support, wherever they are come into the contact, or they may be directly in the contact, or they may be indirectly in the contact with the help of extracellular matrix. So let us see what are the different type of filaments. 5 type of filaments, जो कि basically very, very important. They are structurally similar. All type of filaments are structurally similar. There is difference only at the biochemical level. Diameter ranging intermediate between microtubule and microfilament. They associate with polypeptides, filaggrin, okay, and bind to keratin, plectin like vimentin, or cinnamine also like vimentin but found in muscles. So they associate with various kind of, ये नोट कर लो जरा, ये नोट कर लो एक मिनट के लिए. So glial filament found in non-neuronal cell of CNS, important कर लो, very, very important. Glial filament, astrocyte, oligodendrocyte, microglia, means non-neuronal cells. Keratin filament, characteristic of epithelial cells called tonofilaments, are often associated with desmosome at cell surface. And they participate in the formation of keratin. ये important क्यों है? Because we will study various mutants, experimental part, how they are going to make that part, है ना? So characteristic of epithelial cell called tonofilaments, often associated with desmosome at the cell surface. Desmin, that is the third part. Desmin means smooth, striated cardiac muscles. Okay. Keep sarcomeres of neighboring myofibrils in the ester across width of fiber. Desmin is the part of smooth muscle, cardiac muscle में ज़्यादा पाया जाता है. And they keep sarcomeres of neighboring myofibril linking with the jet band of peripheral myofibril, right? So with the help of jet band, the desmins are connecting one myofibril to another, and they are going to provide uniform tensile strength in the throughout the muscle cells. What about the vimentin? Vimentin abundant in fibroblasts, mesenchymal derivative in bundles, are randomly oriented in network throughout cytoplasm. And last is the neurofilaments. Neurofilaments present in nerve cells. Processes with the cytoskeletal functions help to maintain the gel state of exoplasm and involve in intracellular metabolite support. So अगर desmin पूछा जाए तो they are linking one myofibril to another, right? Vimentin abundant in fibroblasts, right? And they are randomly oriented in network throughout the cytoplasm. Neurofilaments present in nerve cell, processes in cytoskeletal function, help to function gel state of exoplasm, involving intracellular metabolite transport. This is the structure of neurofilaments. So now we will study about how the intermediate filament going to form. There are 5 levels of organization. So let us see one by one. First level with monomer, that is going to form the dimer. In the second case, and this dimer is going to be seems to be rope-like structure, aligned in parallel and bound together in a coiled fashion.
and two dimers then line up side by side to form the tetramer, right? And within each tetramer, the two dimers are offset with respect to one another, thereby allowing it to associate with another tetramer. And finally, the C-utilized structure. You can say 10 nanometer rope-like filaments tetramer are packed together in helical array, which has 16 dimers. तो ये important है कि final जो 10 nanometer का structure है, they are having the at least 16 dimers. How many dimers? 16 dimers. Okay, 16 dimers. Yes, sir. ये देखो पहला स्ट्रक्चर है मोनोमर का एन हमने बताया था दे विल रैप अप अराउंड ईच अदर हेलिकल स्ट्रक्चर अराउंड ईच अदर रोप लाइक स्ट्रक्चर दिस इज कॉल्ड एज द coil dimer. Then staggered tetramer of two coil dimers. Okay, staggered tetramer of two coil dimers. This is the two tetramers packed together, and then final 8 tetramers twisted in rope-like filaments and 8 tetramers total 16 है ना 16 dimers 8 tetramers क्या बोलोगे 16 dimers और 8 नोट कर लो 16 dimers और 8 tetramers. They are going to form the क्या बेटा 16 dimer. हाँ 16 डाइमर कहोगे या 8 टेट्रामर कहोगे Okay. है ना तो फाइनली चूंकि टेट्रामर से ही पैक हो रहा है तो इसको 8 टेट्रामर्स कहते हैं. They are coiling rope-like filament. They are forming with the 8 tetramers. लिख लिया ना This is clear. Alpha helical monomer, coil to coil dimer, then staggered tetramer of two coil to coil dimers, 2 tetramers, and then finally 8 tetramers. अब ना उसी अगर मान लो तुमने ऐसे सीट को स्ट्रेच कर दिया फिर स्ट्रेचिंग ए सीट विदाउट विद इंटरमीडिएट फिलामेंट देन व्हाट विल हैपन टेल मी if there is a presence of intermediate filament in a sheet which you are going to stretch it, then what will happen? Cell will remain intact together. Cell will remain intact together. Here you can see, right? Here you can see cells remain intact together. But if there is no intermediate filament, तब क्या होगा बताओ जरा who will tell me? सुपर्णा अक्षिका आफरीन. सर जो सेल्स हैं वो मतलब स्प्रेड हो जाएंगी जैसे अभी इंटेक्ट है वो इंटेक्ट नहीं रहेंगे तो क्या अगर फिलामेंट्स नहीं सब बर्स्ट कर जाएगा रप्चर हो जाएगा. सेल रप्चर कर जाएगा. एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है cell will rupture. And keratin is found, let us see all classes of intermediate filaments. Keratin in epithelia, vimentin and vimentin related in connective tissue, muscle cell and glial cell. तो ये याद रखना vimentin का बहुत पूछता है glial cell में खास करके. तो vimentin and vimentin related structure present in the glial cells. Neurofilaments, nerve cell. तीन हो गई. चौथा ले लो nuclear lamins in all animal cells. साइटोप्लाज्म में तीन हो गए एक हो गया न्यूक्लियर का. And there are various subfilaments beside the main intermediate. हाँ जी सर ये अभी लिख रही थी मैं सर जस्ट. हाँ ठीक है.
आफरीन तुम कुछ बोल रही थी, बोलो। सर कुछ नहीं सर, ठीक है। आफरीन तुम अप्लाई कर देना, मैंने लिंक दिया है शायद तुमको, ग्रुप में दिया है। तो कौन सा लिंक? एक जेआरएफ की पोजीशन है, जो बता नहीं ना था कि सचिन सर मेरे फ्रेंड हैं, उनके अंडर में जेआरएफ की पोजीशन निकली है। तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजी है ना, ओ, उससे बायोटेक्नोलॉजी ले रहे हैं। तो अप्लाई कर देना, ऑनलाइन अप्लाई करना है। मैंने भेजा नहीं लिंक, ओ भेजा नहीं, बोल रहे हैं। मेरिट लाइफ साइंसेज की वेबसाइट पे डाला है मैंने, वो उस पे डाला है। टेलीग्राम पे मैं शेयर कर देता हूँ अभी। सर हो गया। हो गया? तो ये 4 तरह के याद रहेगा ना। मेन चीज है बेटा मेमोरी, मेमोराइज करना। यू मस्ट मेमोराइज इट वेल, देन देयर विल बी ग्रेटर इम्पैक्ट, देयर इज नो स्कोप ऑफ कंफ्यूजन। तो वेरी क्लियर पिक्चर, साइटोप्लाज्मिक, केराटिन, विमेंटिन, related neurofilaments and nuclear elements. So there are, बहुत एकदम क्लियर है पिक्चर ये वाला। हाँ तो इसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं। एनिमेशन भी डाल दिया ना इसमें। ये भी देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि if intermediate filaments will not be there then cell will rupture. बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। You can see plectin bundling and linking. What about the plectin beside the intermediate filament? देखोगे ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है कहीं पे, एक ब्लू कलर का स्ट्रक्चर, एक रेड कलर का है और एक ग्रीन कलर का छोटा छोटा दिख रहा है ना? यस सर। जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है वही प्लेक्टिन बंडलिंग है। तो प्लेक्टिन क्या करता है, दो इंटरमीडिएट फिलामेंट को लिंक भी करेगा, दे आर गोइंग टू मेक देम bundling and also they are responsible for stabilizing, right? So that's why this is called as the accessory protein. So what is the name of accessory protein which is responsible for bundling, stabilizing intermediate filament? They are called as, so for plectin cause epidermolysis bullosa simplex caused by disruption of skin keratin. Right? So this is the important thing. If there is a mutation in the gene that is related with the plectin or that is related with the epidermis or keratin. So what will happen? So if there is a mutation in the gene for the plectin, they causes EBS. What is the name? EBS. EBS मतलब epidermolysis bullosa and this is simplex. Epidermolysis bullosa simplex. So this is the identification that skin will going to rupture, right? Because there are various linkages that have been disrupted. So they also causes muscular dystrophy, right? Causes by disruption of intermediate filaments in muscle, neurodegeneration caused by disruption of neurofilaments. So mice lacking a functional plectin gene, ये important question है, पूछ सकता है। Mice lacking functional, टॉपिक हम लोगों ने इसमें पढ़ा था ना सर, हाँ डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो होता है इसमें भी है इंटरमीडिएट फिलामेंट, हाँ स्पेक्ट्रिन, इसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट अगर ब्रेक हो गई तब भी प्रॉब्लम है, राइट? सो mice lacking a functional plectin gene will die within few days of birth because their skin will be blistered and abnormal skeletal and hard muscle. Abnormal skeletal and hard muscles. So keratin are the most diverse class of intermediate filaments. Keratin filaments typically span the interior of epithelial cell from one side of the cell to other, and filaments in adjacent epithelial cell are directly connected through cell-cell junction called desmosome. So which is the most diverse class of intermediate filament? Keratins. Right, keratins.
Keratins are the most diverse class of intermediate filaments. And keratin filaments, this is epithelial cell, this is epithelial cell, right? So there is a desmosome. So keratin filaments are connecting to epithelial cell via called as desmosome. This is cell to cell junction. So what is the skin blister? Skin blister means this is a kind of disease in which there is a mutation which is going to form the intermediate filaments or their supportive structures. So finally the tensile strength is going to lost, right? And these epithelial sheets are not going to take any stress and they are going to turn apart. So skin are vulnerable to mechanical injury, right? Skin is highly vulnerable to mechanical injury even on the gentle pressure that can rupture its cell, causing skin to blister. Now you can see this defective keratin filament network, and this is the basal lamina, hemidesmosome. ये येलो वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो? This yellowish structure. This is the basal lamina. Okay. basal lamina. Hemidesmosome, and this dotted structure is defective keratin, and this causes disease called as EBS. E for dermolysis, B for bullosa, S for simplex. सर ये केराटिन फिलामेंट जो है वो अटैच है हेमिडेस्मोसोम से, हाँ, इसमें डिफेक्टिव हो जाएगा तो अच्छा एपिडर्मोलाइसिस बुलोसिस सिम्प्लेक्स। dermolysis, सर bullosa. इस बार वाला स्लाइड सारे स्लाइड अच्छा है सर एज कम्पेयर टू पिछली बार वाले से। इस बार जबरदस्त है ना? अभी बहुत इम्प्रूवमेंट sir, करने जा रहा हूँ, बहुत अच्छा है। ट्रेमेंडस। एक्चुअल में प्रॉपर रिसर्च हो नहीं पा रही थी, पिछली बार थोड़ा मैं डिस्टर्ब बहुत था, अभी तो कोरोना ने बड़ा सही कर दिया। इधर उधर से पूरा टाइम निकाल के मैं रिसर्च कर ली, क्योंकि मेरा दिल तो देखो इसमें लगा रहता है CSIR के क्वेश्चंस में, उसकी जो चीजें हैं उसको माइक्रो डिटेल्स में जाके एक एक चीजों को बहुत ही क्लियरली मेंशन करना। तो पहले ये भी था कि मैं टेक्नोलॉजी सीख रहा था कि टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करते हैं, हाउ टू डिस्प्ले, है ना? मुझे लगता था सारा छूट न जाए। अभी मैं 200 स्लाइड बनाता हूँ और आधे एक घंटे में खत्म हो जाती है। पहले मैं 40-50 स्लाइड बनाने में मुझे लगता था कि क्या हो रहा है, अभी एक्सप्लेन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। That सर is the ये अब difference. ये डायग्राम देख के अच्छा लग रहा है कि अच्छा ये हेमिडेस्मोसोम इससे अटैच है, इस तरह से केराटिन फिलामेंट इंटरमीडिएट जो है, इस तरह से डायग्राम में वाला ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, ध्यान से देखने की बात है, इसको याद कर लो। दैट इज कॉल्ड द पिक्चर मेमोरी। मेरी पिक्चर में भी बहुत अच्छी है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ केराटिन, टू ग्रुप ऑफ केराटिन, टाइप 1 and type 2. So it consists of about 15 different proteins which are expressed in the epithelial cell. इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, you should have knowledge. Each type of epithelial cell synthesize at least one type 1 acidic and type 2 neutral or basic keratins. So they are going to co-polymerize to form final filaments. So that's why there are two type of structures: soft keratins and hard keratin. Hard keratin मतलब nail, hair, horn, ये सारे क्या हैं? Hard keratin. Soft keratin, for example, epithelial cell, है ना? So different keratin being expressed in various differentiated cells. Type 3 intermediate filament, ने बता दिया, vimentin. Vimentin is the part of smooth muscle cell, fibroblast और WBC. ठीक है ना? फाइब्रोब्लास्ट, स्मूथ मसल सेल, व्हाइट ब्लड सेल। फाइब्रोब्लास्ट याद कर लो यहीं पे, फाइब्रोब्लास्ट, स्मूथ मसल सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल।
Fibroblasts, smooth muscles, quiet blood cells, another has desmin muscle cells. Desmin muscle cells. Desmin connect one It is myofibril to other via the help of jet disc. जेट डिस्क की हेल्प से कनेक्ट करते हैं डिस्क में. एंड टाइप थर्ड, इंटरमीडिएट फिलामेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्लियल सेल फॉर्मिंग द न्यूरोफिलामेंट्स. ठीक, न्यूरोफिलामेंट्स. तो ये तीन चीजें एक तो याद रखो. दूसरा टाइप 4 फिलामेंट, they include the three neurofilaments protein designated as NFL, NFM, NFH. NFL, NFM, NFH. न्यूरोफिलामेंट्स टाइप 4, न्यूरोफिलामेंट्स का टाइप 4. ठीक, न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं न्यूरोफिलामेंट्स. नेस्टिन इसमें होते हैं, इंटरनेक्सिन, नेक्सिन, these are the part of type 4 proteins and they are responsible for neuronal developments. ठीक है, तो टाइप 4 आप कहाँ पे देख सकते हो? न्यूरोफिलामेंट्स, न्यूरोनल डेवलपमेंट. नाम क्या है? NFL, NFM, NFH means NF light, NF medium, NF heavy. Okay, NF light, NF medium, NF heavy. NF कितने तरह का हो गया? लाइट, मीडियम, हेवी. इसमें दो प्रोटीन होती हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट, दैट इज अल्फा इंटरनेक्सिन एंड नेस्टिन. अल्फा इंटरनेक्सिन है नेस्टिन. So type 5th intermediate filaments are the nuclear lamins which are found in most eukaryotic cells. Nuclear की बात हो रही है 5th वाला, है ना? इसमें साइटोप्लाज्म में देखा था आपने, वहां पे डायग्रामेटिक में 3 था, लेकिन यहाँ पे 4 है ना? 4 क्लास है. ठीक, फर्स्ट एंड सेकंड कॉमन रख दिया है. फिर थर्ड एलोन, थर्ड में विमेंटिन, जेसमिसिन, फोर्थ में नेक्सिन, नेस्टिन, इंटरनेस्टिन न्यूरोफिलामेंट्स, एंड फिफ्थ में लेमिन्स, राइट? लेमिन्स. सो सर फोर्थ वाला दिखाइए, प्रीवियस स्लाइड सर प्लीज. हाँ, नेस्टिन, इंटरनेस्टिन है ना, जो कि न्यूरॉन डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. स्टेम सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम. Nestin is found in the stem cell of the nervous system. Note कर लो, nestin, stem cell of central nervous system. Stem cell of central nervous system. ठीक, कितना क्लियर है? टाइप 5. Yes, sir. Nuclear lamins. And nuclear lamins, this is the outer part of nuclear envelope. Component of nuclear envelope. Nuclear and type 5th. अब ये चूहे में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था related to the role of intermediate filaments. So there was mutant keratin gene was introduced into the transgenic mice. You can see here macro injection plasmid encoding mutant keratin, and they have been merged with the nucleus of ova. So now they are going to fuse and form in 2N zygote. Embryo develop, and then you can see the transgenic mouse expressing mutant keratin, and they are dying because of
skin blister. They are going to die because of skin abnormalities. That is skin blister. Skin blister. Okay. So microinjected embryo, then transferred to foster mother, and some of the offspring were found to have incorporated and mutant keratin gene into their genome. Expression of the mutant gene in these transgenic mice disrupted the keratin cytoskeleton of cells of the dermis, resulting in severe skin blister due to cell lysis. This is clear. So this shows what? What you can conclude from this experiment? But you can conclude that keratin gene is important. Keratin gene encodes intermediate filaments. And in absence of intermediate filament in mutants, there is absence of intermediate filament, so the causes skin blister. The causes skin blister because keratin is absent. Because here keratin absent. अब कौन चला गया? So, blistering of skin caused by mutant keratin genes. You can see second picture, right? Here you can see, and this is the blistering. Means strengthening is absent because hemidesmosome, basal lamina, hemidesmosome, and defective keratin filament network. These are missing. Intermediate filament is missing. That's why this is causing the blistering of skin. ठीक है? Cell rupture between nucleus and hemidesmosome which connect the keratin filament. Right? Cell rupture between the nucleus and hemidesmosome is causing connecting the keratin filament. लिख लो. Cell in mutant cells. कलर चेंज कर ले. In mutant cells, what happens? Cell in the basal layer rupture between nucleus and the hemidesmosomes. Right? This hemidesmosome connects keratin filament, connects keratin filaments to basal lamina. Clear है? Yes, sir. So, what is the role in nucleus? You can see they are the part of outer envelope, nuclear envelope, and laminin is another thing. Laminin is another thing. Laminin is the part of extracellular matrix, and whatever the protein found over the nucleus envelope, nuclear envelope,
is called as the lamins. Right, lamins. And that's why this is called as the nuclear lamina. So intermediate filament within this tough nuclear lamina. Okay, they are constructed from intermediate filaments. So disassembly and reassembly of the nuclear lamina are controlled by phosphorylation and dephosphorylation. Phosphorylation and dephosphorylation. So reassembly, dephosphorylation. बोलो क्या होगा? Dephosphorylation. Disassembly, phosphorylation. So lamins are intranuclear, forming the lamina that lines the nuclear envelope, and membrane anchorage site are generated by post-translational modification of lamins. So upon सर reinforce phosphorylation, मतलब क्या होता है? reinforce मतलब cementing structure. Reinforce the nuclear envelope. ये वाला डायग्राम देखो ना, ये देखो, ये न्यूक्लियर लेमिना है और ये न्यूक्लियर पोर है, ये न्यूक्लियर एनवलप है. न्यूक्लियर एनवलप के नीचे क्या है? ये सीमेंटिंग स्ट्रक्चर है. ईंटे के ऊपर सीमेंट लगाते हैं ना, हाँ, तो उसी तरह से स्ट्रेंथनिंग करने के लिए lamin intermediate filaments reinforce the nuclear envelope. All right. So how they are modified? Upon phosphorylation by CDK1, lamin filaments depolymerize. ये important है. Upon phosphorylation by CDK1, lamin depolymerize. Right, and this allows disassembly of nuclear envelope during mitosis. So lamin goes under, lamin genes undergo alternative splicing. ये लड़के की पिक्चर देखा था, अमिताभ बच्चन ने साथ रोल किया था ना, पा. हाँ यस सर, याद है? Yes. पा मूवी में प्रोजेक्ट. हाँ, this disease is called as the progeria. Progeria. डिजीज. हाँ, progeria syndrome called Hutchinson-Gilford syndrome. इसमें क्या था कि बच्चा जो है ओल्ड एजेड मैन की तरह दिखता है. They look like old aged person because their nuclear lamins are disturbed, defective, wrinkled skin they have, they lose their teeth and hair, several cardiovascular disease, है ना? That's why overall they look like a old aged person, right? So they have a tissue repair problem because of impaired cell division, that is called as the progeria. Progeria. ठीक है, तो two largest intermediate filaments are type 1, type 2 keratin. Most of the intermediate filaments protein in mammals are keratin. Keratiners are obligate heteropolymers of type 1 and type 2 proteins. Paired keratin expression is predictive of epithelial differentiation and proliferative status. Simple keratin K8 and K18 are the least specialized keratin. Paired में रहेंगे तब तो काफी अच्छा expression होगा उनका. They can express well, they proliferate well. A simple keratin K8 and K18 are the least specialized keratin. Least specialized keratins. ठीक है. See, when the divergent length filament protein are conserved in evolution. I-lens contain two highly unusual intermediate filament protein called as CP49. CP49. क्या नाम है? CP49. This is the part of I-lens.
and these unusual intermediate filament protein are conserved in evolution of vertebrates. Right? Intermediate filament segment assemble with high affinity into strain resistant structure. In vitro intermediate filament assembly is rapid and require no additional factor. So what you can conclude, certain alpha helical rod is going to form the dimers and the tetramers, जैसे कि बता चुके हैं, right? And then they are going to form the final stable structure. And phosphorylation is the main mechanism of intermediate filament remodeling in the cells. Alright, so there may be proteolytic degradation, they modulate protein quantity, they facilitate apoptosis. So these are post-transcriptional modifications. So how the intermediate filament gene families evolve? They are going to evolve by duplication and translocation, followed by further duplication events. Right? Human have 70 almost gene including intermediate filament proteins. Human keratin genes are clustered, right? But non-keratin intermediate filament genes are dispersed. So what are the diseases caused by defect in the intermediate filaments? Already we have discussed EBS, epidermolysis, bullosa simplex, Alzheimer's disease, and alcoholic liver cirrhosis, accumulation of keratin filaments, forming inclusions called Mallory bodies in the liver. Mallory bodies in the liver, that is called as the alcohol liver cirrhosis. Alzheimer's disease caused by changes in the neurofilaments within the brain. And EBS, blister caused due to lack of normal bundle of keratin filaments. Mutation the keratin cause epithelial cell fragility. Mutation K5, K14 cause the skin blistering disorder. Severe EBS mutation are associated with the accumulated non-filamentous keratin. Right? So desmin is an essential muscle protein. Memantine is often expressed in solitary cells. Mutation in the type 3rd or type 4 genes are usually associated with muscular or neurological degenerative disorder. So याद रखो desmin, essential muscle protein, memantine often expressed in solitary cells, and mutation in type 3rd and 4th are usually associated with muscular or neurological disorder. 3rd वाला तो muscular से है, 4th वाला neurological से है, neurons से है, तो obviously they are going to make them defective. ठीक है, तो आज इतना ही, and then yesterday we'll discuss, tomorrow we'll discuss about the microtubules. ठीक है, Yes, sir. प्रैक्टिस करो, बार बार पढ़ो, है ना? जितनी बार पढ़ोगे नई नई चीजें दिखेगी. जैसे CDK1 का क्या रोल है? डीपॉलीमराइज. सब जगह पॉलीमराइजेशन होता है, यहाँ पे उल्टा है. लेमिन अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, है ना? P0 डिजीज. सो ये सारा चीज आप रिवाइज करो अच्छे से. राइट, रिवीजन इज CP49 आई लेंस में होता है, राइट? आई लेंस में होता है. दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. टेट्रामर है ना? 8 टेट्रामर्स कल पढ़ेंगे आपको. माइक्रोट्यूबुलिन स्ट्रक्चर एंड डिटेल्स. MTOC के बारे में आता है ये सवाल, वो कल पढ़ेंगे. ठीक है ना? तो ये है, आपने लिया था ये जीन्स, एसिडिक केराटिन, न्यूट्रल केराटिन, विमेंटिन, डेस्मिन, कितने जीन्स. प्रीवियस स्लाइड सर, वो जो तीनों का कंपैरेटिव जो है. हाँ, ओके सर. अनपोलराइज्ड है इंटरमीडिएट, याद रखना. पोलराइज दोनों है, माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूबुल. हाँ ये सर. काइनेसिन डायनिन माइक्रोट्यूबुल का पार्ट है, जबकि मायोसिन एक्टिन का पार्ट है माइक्रोफिलामेंट. ठीक है, तो अल्फा बीटा ट्यूबुलिन बाइंड्स GTP.
तो टुमारो विल स्टडी अबाउट द माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक देख लेना, वो निकला हुआ है जॉब का, जॉब ही है, मैं बोल दूंगा सर से, आप अप्लाई कर देना। ठीक है, उसमें खाली नेट ही चाहिए।